So today we will discuss a very important section, very important question, principle of superposition. So principle of superposition कौन कहूँ आमे Coulomb's law रे देखिचे the electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and varies inversely as the square of the distance between them. Coulomb's law रे दीटा चार्ज पार्टिकल भितर केते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें बाहर कर परिबा किंतु प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कोन नेट इन ए सिस्टम इफ देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट गोटे सिस्टम रे जदी बहुत रे चार्ज पार्टिकल अछि तले व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन वन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस गोटे चार्ज पार्टिकल ऊपर अन्य समस्त मिसिकी नेट फोर्स केते पकेबे से होची प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन व्हाट इज द नेट फोर्स acting on one particle due to all other particles. This is your principle of superposition. So principle of superposition कौन कहूची एटा देखो एटा गोटे सिस्टम रे Q1 Q2 Q3 Q4 चारटा पार्टिकल अछि आम कौन बाहर करवा Q1 उपरे अन्य समस्त मिसी केते फोर्स पकुछन बाहर कर परिबा Q1 उपरे अन्य समस्त मिसी नेट फोर्स केते पकुछन हम बाहर कर परिबा Q1 ऊपर किए पकेबो Q2 फोर्स पकोची Q2 केते फोर्स पकोची ना F12 फोर्स पकोची सिने Q1 ऊपर आउ के पकोची Q3 पकोची Q3 केते फोर्स पकोची F13 सिने Q4 पकोची Q4 केते पकोची Q1 ऊपर Q4 केते पकोची F14 पकोची सो आमे बर्तन टोटल फोर्स केते बाहर करबा सो जदी Q1 ऊपर Q2 पकेला Q3 पकेला Q4 पकेला Q1 ऊपर जदी Q2 F12 पकेला जदी Q1 ऊपर जदी Q2 F12 पकेला Q3 जदी F13 पकेला Q4 जदी F14 पकेला तो समस्त मिसी केते फोर्स पकेबे F1 इक्वल टू Q12 प्लस Q13 प्लस Q14 सो गोटे पार्टिकल ऊपर अन्य समस्त मिसी जदी फोर्स पकोचनी सेरा होछ तमरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कोन ना it states that all the charges when placed near each other behave independent of each other and the net force on one charge due to all other charges is equal to the vector sum of all the forces produced by them on the first in accordance with Coulomb's law. In accordance with
Coulomb's law ହେଲା so କଣ କହୁଛି it states that all the charges when placed near each other behave independent of each other ବହୁତ ଯଦି charge particle ଅଛି ଗୋଟେ system ରେ ତାହେଲେ ସେମାନେ independent ଭଳି behave କରିବେ and the net force on one charge due to all other charges ଗୋଟେ charge particle ଉପରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କେତେ net force ପକେଇବେ all other charges is equal to the vector sum of all the forces समस्त से force उडार सब कोन हबो vector sum of all the forces one जति force पकेला मनर सपोज हम बाहर करियो आईडी बाहर करछे हम मनर बाहर करछे q1 पर के पकुची q2 पकुची q2 पर केते पकुची f12 सेने q3 केते पकुची f13 सेने q4 केते पकुची f14 सो टोटल फोर्स केते हबो सबुजा फोर्स रो वेक्टर सम दैट मींस f1 इक्वल केते हबो फर्स्ट चार्ज पर केते फोर्स पकेबे f12 plus f13 plus f14 so vector sum of all the forces produced by them on the first in accordance with the Coulomb's law अनुसार समस्त वेक्टर सम हमें बाहर करबा सेटा होछ तमर कोन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन so Coulomb's law gives Coulomb's law gives the electrostatic force on a charge due to another charge due to and the force on a certain charge and the force on a certain charge due to a large number of other charges due to a large number of other charges can be obtained by the principle of superposition. So कौन करला Coulomb's law gives the electrostatic force on a charge due to another charge. Coulomb's law कौन यूज करछि force acting on a charge particle due to other charges. किंतु गोटे जदि गोटे सिस्टम रे जदि बहुत गुडे चार्ज पार्टिकल अछि तापर गोटे चार्ज ऊपर अन्य समस्त मिसिकी केते फोर्स पकेबे सेते कोन हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करिके हम बाहर करि परिबा सो Coulomb's law gives the electrostatic force on a charge due to another charge and the force on a certain charge due to a large number of other charges can be obtained by the principle of superposition ହେଲା सो हम वर्तमान प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रो एक्सप्रेशन बाहर करि परिबा लेट बर्तन कत बार करिया हम देखो एथिरो लेट f12 with the force acting on charge q1 due to q2 q1 ऊपर q2 जति फोर्स पगुची सिरा होची तमरो f12 ए लिखिबा हमें let f12 is the net force acting on charge q1 acting
net force acting on charge q1 due to charge q2 due to charge q2 ହେଲା let F12 with the net force acting on charge q1 due to charge q2 q1 उपरे q2 जति फोर्स पकोछि सेटा हमर केते आसला F12 बर्तमान बा F12 केते बाहर करो then according to Coulomb's law then F12 equal केते आसीओ F12 equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r12 square into r21 cap ହେଲା similarly so এটা কোন force acting on charge q1 due to q2 q1 ऊपर q2 जति force पहुंचे हमरा स्लेप 1 2 सेने q1 ऊपर q3 केते पकेबो similarly f13 equal केते आसीबो 1 by 4 pi epsilon 0 into q1 q3 by r13 square into r31 cap and f14 equal kete 1 by 4 pi epsilon 0 so q1 ऊपर q2 केते फोर्स पकुछि f12 q1 ऊपर q3 केते फोर्स पकुछि f13 एंड q1 ऊपर q4 केते पकुछि f14 so वर्तमान f1 ऊपर टोटल फोर्स केते आसीबो f1 ऊपर टोटल फोर्स केते आसीबो f12 प्लस f13 प्लस f14 हला so हमरो टोटल फोर्स केते आसीबो 1 ऊपर केते q1 ऊपर के पकुछि q2 पकुछि q3 पकुछि q4 पकुछि सो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q1 ड्यू टू ऑल द चार्जेस एडी चारटा पार्टिकल अछि q1 q2 q3 q4 सो q1 ऊपर के पकेबो q2 पकेबो q3 पकेबो q4 पकेबो सो टोटल फोर्स केते आसीबो f12 प्लस f13 प्लस f14 हला सो हमें बाहर करिया बर्तन टोटल फोर्स q1 ऊपर केते पकुछि हमें बाहर करिया if f1 is the net force f1 is the net force acting on charge q1 acting on charge q1 due to all the charges in the configuration due to all the charges in the configuration then हमर केते आसीओ f1 q1 ऊपर केते फोर्स पड़ियो then f1 इक्वल केते आसीबो हमर f12
plus F13 plus F1 force. Net force acting on charge Q1 due to all the charges in the configuration. एटा को आमे दबा केते इक्वेशन 1 हला बर्तन कोन करिया आमे F12 F13 F14 सो वैल्यू पुट करो और F1 इक्वल केते आसो 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12 square into R21 cap plus Q1 Q3 plus R41 cap हला सो इडा असला जो R21 R31 R41 कोन एडा सब होचे R21 cap एडा होचे यूनिट वेक्टर along the direction of F12 R21 होचे यूनिट वेक्टर along the direction of F12 sin R31 होचे यूनिट वेक्टर along the direction of F13 sin R41 होचे यूनिट वेक्टर along the direction of F14 हला अच्छा बर्तन Q1 ऊपर के फोर्स पकोची Q2 Q3 Q4 Q1 ऊपर Q1 फोर्स पके परियोनी Q1 ऊपर Q1 फोर्स पके परियोनी डिस्टेंस 0 होइजु Q1 ऊपर के पकेबो Q2 Q3 Q4 सिने Q2 ऊपर के पकेबो Q2 छाडी के बळगा तीनटा Q1 Q3 Q4 सिने Q3 ऊपर के पकेबो Q1 Q2 Q4 इन बाहर करबा अच्छा बर्तन एटा बाहर करले Q1 ऊपर समस्त मिसी केते फोर्स पकोची बाहर करले बर्तन हम बाहर पकेबा Q2 ऊपर अन्य सब चार्ज पार्टिकल मिसी केते फोर्स पकोची हमें कैलकुलेट करबा similarly the net force acting on charge Q2 in the configuration that's what F2 equal to के पकेबो F21 plus F23 plus F24 है सो यार वैल्यू पको और F2 इक्वल केते आसबो 1 by 4 pi epsilon 0 into same पकेबा Q2 पर के पकेबो Q1 so Q2 Q1 by R21 square into R12 cap plus Q2 Q3 by R23 square into R32 cap plus Q2 Q4 by R24 square into R42 cap है सो आम चार्टा पार्टिकल थिले आम गोटे पार्टिकल उपर अन्य समस्त मिसी केते फोर्स पकोज आम बाहर कर परिए मनर गोटे जगह मनर 100 चार्ज पार्टिकल थांदा 100 पार्टिकल थांदा गोटे पार्टिकल गोटे जगह मनर 1000 पार्टिकल थांदा तो गोटे पार्टिकल उपर अन्य समस्त मिसी केते बाहर करबा मनर गोटे सिस्टम रे 1000 पार्टिकल थांदा से पचास थांदा Q10 उपर अन्य समस्त मिसी केते बाहर करथांदे हम कोन किन बाहर करबा आमे से कोन करबा को गोटे समेशन फॉर्म यूज करबा सो इन जनरल if
Fi is the net force acting on the ith charge in the configuration, ith charge in the configuration, then Fi equal to केते आमर, then Fi force acting on the ith particle, I equal to 10 होई पारे, I equal to 20 होई पारे, 20 नंबर पार्टिकल पर अन्य समस्त मिसी केते पकोचंदी, I 10 नंबर पार्टिकल पर अन्य समस्त मिसी केते फोर्स पकोचंदी, केते बाहर करिया Fi equal to केते आसबो आमर 1/4 pi epsilon 0 into summation over j equal to 1 to n j net equals to I qi qj by rij square into rji k हला qi qj मनर 10 टा पार्टिकल अछि j equal to 1 to 10 j not equals to I, so केता हो q1 q2 by r12 plus q1 q3 by r13 plus q1 q4 by r14 plus q1 q5 by r15 square q1 q6 by r16 square plus q1 q7 by r17 square इन आसियो 10 टा पार्टिकल इन बाहर करिया 20 टा पार्टिकल बाहर करिया q1 q2 by r12 square q1 q3 by r13 square q1 q4 by r14 square इन 20 50 100 सब नंबर पार्टिकल हमें बाहर करि परिबा, सो force acting on the ith charge केते असला Fi equal to 1/4 epsilon 0 summation over j equal to 1 to n j not equals to I qi qj by rij square into rji k. इटा दबा हमें इक्वेशन नंबर 2 हला बर्तमान जो यूनिट वेक्टर केते यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्शन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम जानछे यूनिट वेक्टर रो फार्मूला होची डायरेक्शन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बर्तमान यार वैल्यू पकेबा तो एटा केते आसीबो हमरो और Fi equal to 1 by j equal to 1 to n j not equals to I qi qj by r I0 square into r ji cap चला और Fi equal कितना असला 1/4 pi epsilon 0 j equal to 1 to n j not equals to I into qi qj by r into unit vector equal केते direction vector by magnitude vector सेडा केते पकेबा r ji रो direction by तुम सब प्लस 2 रे पढछो unit vector कोन it is a vector having magnitude 1 तार magnitude होची 1 by unit और तार direction कोन direction होची along the direction of given vector हला सो बर्तमान एटा केते असले एटा होची r square into r एटा होची magnitude r square into r equal r cap ए r q r square into r equal r q सो एटा केते आसीबो और Fi equal केते आसीबो 1/4 pi epsilon 0 summation over j equal to 1 to n
QI QJ by RIJ रो Q into RJI बुझेला so it is a very important equation এটা দবা আমি ইকুয়েশন সো আমি বর্তমানে পজিশন ভেক্টরটা আমি লিখিবা পজিশন ভেক্টর কেতে rji ইকুয়াল টু আমি জানছে ri minus rj rji equal to ri minus rj in terms of position vector in terms of position vectors ହେଲା ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ position vectors এটা କେତେ ଆସିବ ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ position vector ରେ ଏଟା ବୁଝେଇବା ମନର ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ନେବି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ନେବି ମୁଁ O ଏଟା ମନର ଆମେ ନବା ଏଟା ନବା A ବୋଲି ନବା ଏଟା ନବା B ଏଟା ନବା C ଏଟା ନେବି ମୁଁ D ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ O in triangle OAB ଦେଖ in triangle OAB OAB ରେ कोण होची एटा ट्रायंगल फैक्टराइजेशन पको एडी होची OA plus AB equal to OB ହେଲା एटी हम नियो वर्तमान पोजीशन वेक्टर बाहर करबा in triangle OAB OA plus AB equal to कितना असला OB और AB equal कितना आसो OB minus OB OB equal कितना नहीं से तुम्हें R2 minus है ना सो देखो वर्तमान कितना आसो ए फिगर देखो OAB रे OA plus AB equal OB सो वर्तमान हम पकेवा कितना आसो एटा OA equal नीचे R1 AB equal नीचे R12 OB equal नीचे तुम कितने R2 हला सो वर्तमान AB equal कितने तुमरो AB होची R12 सो AB equal कितने पकेवा हमें AB equal पकेवा R12 equal to R2 minus R12 R12 যদি R2 minus R1 नबो similarly R13 कितना हो and R13 equal कितने R3 minus R1 sin R14 कितने R4 minus R1 सिमिति RJ कितना हो RJ equal to RI minus RJ similarly in the same way RIJ equal कितना हो sorry RJI हाँ RJI तुम कितने बार करते डी RJI equal कितने RI minus RJ होला सो देखो पोजीशन वेक्टर एटा केते आसीबो FI equal to FI equal केते हबो 1 by 4 pi epsilon 0 summation over j equal to 1 to n j not equals to I into QI QJ by RIJ equal केते लिखी मु RJ मु बाहर करछे RJ minus RI हला RJ minus RI रो whole Q इतना नीचो whole Q into RJ बदल केते पकेबा RJ minus
आर आई है आर जे आई को केते बार करते आर आई माइनस आर जे आर आई माइनस आर जे ये आई जे हेलु ये आई जे हेलु आर जे माइनस आर ए है किंतु ये आर जे आई हेलु आर आई माइनस आर जे हम है ये हूँ तुम इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर ये हूँ कहते सो आम मनर गोटे चार्ज उपर अन्य सब चार्ज केते फोर्स पकाउछ आम कैलकुलेट करबा इफ एफ इज द टोटल फोर्स if F is the total force acting on a system on a system due to discrete charges डिस्क्रीट चार्ज कौन बहुत गोटे सिस्टम रे बहुत चार्ज पार्टिकल अच्छी 100 पार्टिकल अच्छी 200 पार्टिकल अच्छी 1000 पार्टिकल अच्छी तो जो बहुत पार्टिकल अच्छी तो गोटे चार्ज उपरे अन्य समस्त मिश्री केते फोर्स पकेबे जदि सी चार्ज टा मनर F1 ऊपर समस्त Q1 ऊपर अन्य समस्त केते मिश्री आमे बाहर करबा हला सो एटा देखो माउथ टिके एटा कहि दोछि टिके एटा फिगरटा बुझिजो फिगरटा बुझिला हम सबजा बुझि जाई परिया देखो एटा गोटे सिस्टम XYZ गोटे 3 डायमेंशनल सिस्टम एटी चारटा पार्टिकल अछि Q1 Q2 Q3 Q4 Q A जगह अछि Q1 B जगह अछि Q2 C जगह अछि Q3 D जगह अछि Q4 सिन Q1 ର पोजीशन वेक्टर होची R1 दैट मींस ओरिजिन टू से पॉइंट ର दूरता होची R1 एडा को होची पोजीशन वेक्टर ओरिजिन टू Q1 ର दूरता जहा सेला होची Q1 ର पोजीशन वेक्टर सिन ओरिजिन टू Q2 ର दूरता जहा सेला होची R2 Q2 ର पोजीशन वेक्टर ओरिजिन टू Q3 ର दूरता जहा सेला होची Q3 ର पोजीशन वेक्टर R3 सिन दी Q4 पोजीशन वेक्टर होची R4 वर्तमान देखो Q1 ऊपर Q2 जहा फोर्स पकोची Q1 ऊपर Q2 जहा फोर्स पकोची सेला होची ए डायरेक्शन आसीओ F12 सिंदी Q1 ऊपर Q3 जहा फोर्स पकोची सेला होची F13 ए डायरेक्शन आसीओ सिंदी Q1 ऊपर Q4 जहा फोर्स पकोची सेला होची F14 ए डायरेक्शन आसीओ हला सो वर्तमान केता आसीरा एटा जदी F1 टू ए डायरेक्शन आसीओ R1 टू ए डायरेक्शन आसीओ देखो एटा होची R12 बुझुची एटा जदी F13 जो डायरेक्शन आसीओ सेला होची R13 तार ऑपोजिट डायरेक्शन आसीओ एटा होची R13 एटा होची F13 डायरेक्शन एटा होची R13 डायरेक्शन ए डायरेक्शन हला सेमती एटा जदी F14 डायरेक्शन एटा हबो R14 रो डायरेक्शन सेमिस्ते समस्त मिसी की या पर जति फोर्स पकोछंदी Q1 ऊपर के फोर्स पकेबो Q2 Q3 Q4 जेतु सिस्टम रे चारटा पार्टिकल अछि सो Q1 ऊपर के पकेबो Q2 Q3 Q4 सो समस्त मिसी की Q1 ऊपर जहा फोर्स पकेबो सेटा होची F1 Q1 ऊपर Q2 Q3 Q4 मिसी जहा फोर्स पकेबे सेटा होची कोन तमरो F1 सो F1 इक्वल केता आसीबो F1 इक्वल आसीबो F1 इक्वल केता आसीबो तमरो F1 इक्वल आसला F12 plus F13 plus F14 मनर 10टा पार्टिकल थांदा Q1 ऊपर के पके थांदा Q2 Q3 Q4 इन आसंदा सो जदी गोटे सिस्टम जदी 100टा पार्टिकल थांदा ताहले Q1 ऊपर समस्त केते Q2 टू Q 100 पर्यंत पके थाते Q2 Q3 Q4 में पके थाते सो एटा केते आसीबो सो एटा केते आसीबो सो जदि आमे गोटे चार्ज ऊपर अन्य समस्त मिसी केते फोर्स पकोचंदी जदि आमे बाहर करबा इफ F इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस देन हम केते आसीबो
FA equal to आसिबो FA equal to आसिबो 1 by 4 pi epsilon 0 ij 1 to n I not equals to j into qi qj by rj into ri minus r होला এটা হচ্ছে তোমার ফাইনাল এক্সপ্রেশন ফর প্রিন্সিপল অফ সুপারপোজিশন এর দিয়ে কোশ্চেন নাম্বার 5 net force acting on a system due to all the charges in the configuration net force acting on one charge net force acting on one charge due to all other charges in the configuration in the configuration which is the principle of superposition ହେଲା सो गोटे सिस्टम रे जदी बहुत गुड़े चार्ज पार्टिकल अच्छी तो गोटे चार्ज उपरे अन्य सब चार्ज मिसी जते फोर्स पकेबे सेटा तुमरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इट इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा सब बेले पचारियो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आकु बेस करी शॉर्ट क्वेश्चन डा पचारियो सो एटा तमे भलसे बुझिथियो बोली म आशा करछि हमरो वर्तमान आम नेक्स्ट क्लास रे हम देखिबा इलेक्ट्रिक फील्ड कोन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज due to a group of point charges electric dipole electric field intensity to electric dipole Gauss law एवढा समय डिस्कशन करियो हला थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू थैंक यू